my dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today, let we start SST chapter number 3, Natural Vegetation and Wildlife. Forest यानी कि इस पार्ट में हम पढ़ेंगे जंगलों के बारे में, प्रकृति के बारे में, वेजिटेशन जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और विल्ड लाइफ के बारे में. The term natural vegetation and wildlife refers to the flora and fauna that coexist in a location's natural habitat and are an essential component of the Earth's biosphere. तो यहाँ पे बात हो रही है प्राकृतिक वनस्पतियों की और वन्य जीवन की. ठीक है, कैसे मतलब ये लोग मतलब सर्वाइव करते हैं, सो कैसे यहाँ पे जीवन होता है. तो मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर आर की फैक्टर्स इन वेजिटेशन ग्रोथ. मॉइस्चर कंटेंट और टेम्परेचर जो होता है वो क्या वेजिटेशन ग्रोथ का फैक्टर होता है एक तरह से. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्स सच एज सॉइल थिकनेस. तो वो उस पे ना अपने एलिमेंट्स पे डिपेंड होता है कि कैसी मिट्टी, कैसी थिकनेस है, स्लॉप है. बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशंस नेचुरल वेजिटेशन डिफर्स. ठीक है ना. तो इस तरह से अलग अलग तरह की मिट्टियां होती हैं, अलग अलग तरह की जमीनें होती हैं, अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है. तो उसी हिसाब से ये उसी तरह की वनस्पतियां अलग अलग टाइप से होती हैं. ठीक है. तो डिफर्स इन टाइप एंड थिकनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. एक लोकेशन से जो दूसरी लोकेशन है उस टाइप से. सो 3 जनरल कैटेगरीज कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई नेचुरल वेजिटेशन. सबसे पहले आता है फॉरेस्ट. सबसे ज्यादा जंगलों में वनस्पतियां पाई जाती हैं. They develop in areas with enough rainfall and temperature to sustain a canopy of trees. So open and dense forests are grown based on these variable. ठीक है. फिर होता है दूसरा grassland. These are found in areas with moderate rainfall. Shrubs, thorny shrubs and scrubs grow in the dry region. सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट. So the following major types of vegetations are found. तो जो है ये विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जंगलों में पाई जाती हैं. देखते हैं द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं. द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड, डेजर्ट वेजिटेशन एंड टुंड्रा वेजिटेशन. ठीक है ना. टुंड्रा. So first of all we will talk about the tropical evergreen forest. So tropical evergreen forests are also called tropical rainforests. So these dense forests are found in areas that are close to the tropics and the equator. So these areas are hot all year around and get a lot of rain. So the trees don't lose their leaves because there is not dry season. यहाँ पे क्या होते हैं ना, पेड़ों से पत्तियां नहीं गिरती क्योंकि यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं होता. ठीक है. पतझड़ का बोलते हैं जिसको. सो दे आर नोन एज एवरग्रीन. ये हमेशा जो है ग्रीन रहते हैं. फॉर दिस रीजन द रीजन एक्सटेंड्स जनरली बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ latitude. So these are found in hot and humid areas. गर्म और ह्यूमिडिटी यानी उमस वाला जो एरिया होता है, where annual rainfall is about 200 centimeter due to high temperature and heavy rainfall. Natural vegetation is dense and impenetrable in evergreen forests. Its main areas are Malaysia, Indonesia, Papua and New Guinea and parts of Thailand. Western Ghat and hills of Assam in India. Amazon Basin, South America, Congo Basin and Guinea, Africa. The main trees of these forests are ebony, mahogany and rosewood. Elephant, rhinoceros, monkeys, reptiles, hippopotamuses, crocodiles, alligators, varieties of insects, mosquitoes, butterfly, test flies, ants and birds are here found. ठीक है. देखिए द ट्रॉपिकल डिकीडियस फॉरेस्ट ये क्या होते हैं. सो आगे पढ़ते हैं इनके बारे में. सो लेट वी रीड. ट्रॉपिकल डिकीडियस इज द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, Northern Australia and Central America. These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry seasons to conserve water. The hardwood trees found in मतलब बहुत ही हार्ड लकड़ी के होते हैं कि जंगल आर साल, टीक, नीम एंड शीशम विच आर यूज्ड टू मेक फर्नीचर. मतलब बहुत ही हार्ड और बहुत ही मजबूत लकड़ी के पेड़ होते हैं यहाँ पे.
Transport and construction materials, tigers, lions, elephants, langurs, and monkeys are the common animals of these regions. Okay. Number 3, tropical and temperate grassland. Depending on the climate, there are two types of grassland, tropical and temperate grassland. The temperate grasslands are located in latitudes 40 degree to 55 degree north and south of the equator. So these grasslands are known as steppes in Asia and Europe. Prairies in North America, palms in South America, woods in South Africa, and downs in Australia. So due to scanty rainfall, deep-rooted grasses are found. Now these grasslands have been converted into wheat farms, and these areas have become the wheat granary of the world. Tropical grassland are found within the tropical zones between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So these are known as Campos in Brazil, Llanos in Orinoco Basin, and in Africa as savanna. The grass of this grassland is coarse and very tall and grows to heights of 1 to 2 meters. As a result, it is also called elephant grass. इसको जो है elephant यानी हाथी घास भी बोलते हैं. Zebras, deers, antelopes, tigers, lions, foxes, and rabbits are common in this region. Several reptiles, crocodiles, alligators, and hippopotamus live near watercourses. Land birds include crossway, ostrich, emu, and wren. In the downs of Australia, kangaroos are also found. Desert vegetation. Desert or semi-desert regions comprises Kalahari and Sahara in Africa, Lower California and Northwest Mexico, in North America, Atacama in South America, Arabia West Rajasthan, and Sindh in Asia. And Western Australia, owing to scanty rainfall desert, do not have continuous over cover of plants, short scrub occur in patches, and cactus, thorny bushes, and coarse grasses are found in deserts. Date palms are found near water courses in the Thar Desert. Babul, kikar, khair, and some dwarf trees are also found here. Tundra vegetation, yani tundra pradesh. In the cool climate, the tundra type of vegetation occurs in the polar regions of Europe, Asia, and North America. There is a short growing season of less than 3 more months during summer. The land is snow covered during the long winter, and due to the extremely cold climate, the normal tree growth is impossible. देख रहे हैं ना आप इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे पेड़ हो ही नहीं सकते. So, natural vegetation comprises mosses, lichens, and a few berry-bearing bushes, flowers, etc. These plants are adapted to conditions prevailing in the region. The animals which are mostly found in the tundra region are caribou, reindeer, muskox, wolves, polar bears, and flamingo. In the oceans are found cod, a common variety of fish, whales, and walrus. Okay, so dear students, this chapter is in here. Now let's begin. So dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand all chapters. So we will meet you the next class. Thank you everyone.